गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे मॉडल स्पीड डिक्टेशंस वॉल्यूम 1 एंड 2 बाय जीडी बिस्ट की डिक्टेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, कुछ एक टेक्निकल चीज़ें मैं अभी आप स्क्रीन में देखेंगे और आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि भी शॉर्ट हैंड स्पीड इंक्रीजिंग के लिए और एक्यूरेसी के लिए आउटलाइन से भी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारी ज्वाइनिंग्स। जितनी अच्छी ज्वाइनिंग्स हमारी रहेंगी, हमारी एक्यूरेसी और स्पीड इंप्रूवमेंट उतना ही अच्छा रहेगा। तो स्क्रीन में मैंने कुछ आउटलाइंस और ज्वाइनिंग दी हैं, आप इन्हें देखें, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपकी स्पीड में धीरे धीरे इंक्रीमेंट होती रहेगी। डिड नॉट इज कंसर्न टू एक्सप्लेन टू देम हाउ इट वाज। अब स्टूडेंट्स, कई आप में से सोचेंगे कि हाउ के साथ इट वाज कैसे जुड़ा है। तो अगर हम ग्रामेटिकली सोचें और देखें कि शुड इट वाज कभी नहीं होता, तो हमने हाउ का अपर टिक लिया है और उसके साथ इट और वाज जुड़ा है और इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे हाउ इट वाज। एंड फोर ज्वाइनिंग है, इट वाज नॉट की हमारे पास ज्वाइनिंग है। ऑल ऑफ अस, ऑल अस कभी नहीं होता, इसलिए हम ऑल के साथ अस को जोड़ते हैं और जब एक लाइन को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे को माइंड को पता लग जाता है कि ये जो लिखा है हमने वो लिखा है ऑल ऑफ अस। लेट अस टू रिमाइंड व्हाट वुड हैपन। व्हाट वुड हैपन हम जब लिखेंगे तो हमें एच लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें हम पी के साथ एन हुक लगाएंगे। डज नॉट को हमको जब भी लिखना होता है, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं इट इज़ नॉट और डज नॉट पे, तो हम जब भी डज नॉट लिखेंगे तो हम उसमें डी को काटेंगे, इससे हमें डज नॉट को ढूंढना पढ़ना आसान हो जाता है। हाउ विल एक ज्वाइनिंग रहेगी हमारी। होलसेल ट्रेड ये ज्वाइनिंग रहेगी। देयर वर ज्वाइनिंग है। हु वर ज्वाइनिंग है। इन द ग्रिप ये भी एक ज्वाइनिंग रहेगी। ऑफ वन ऑफ द। ड्रॉट में हम डी को आर हुक के साथ लेंगे और हाफ रखेंगे और आउ का डिफ्थोंग इसमें यहां यूज करेंगे। इट वुड हैव बीन एंड इट वाज ओनली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये एक आउटलाइन है, इसमें हमने पब्लिक का जो हमारे पास कंट्रैक्शन है उसमें सेशन लगाया है और उसे एसएम से काटा है, तो इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। When we एक ज्वाइनिंग है। ओवर द ईयर्स ज्वाइनिंग है। वी वांट एक ज्वाइनिंग है। इट कैन नॉट बी। फूड ग्रेन्स, देर इज नो अदर। ओवरनाइट, ओवर अ पीरियड ऑफ। अब ओवर अ पीरियड ऑफ में हम ओवर पीरियड ऑफ कभी नहीं होता, इसके लिए हम क्या करेंगे, ओवर के साथ पी को डबल करते हुए एफ हुक लगाएंगे और इसे हम पढ़ेंगे ओवर द पीरियड ऑफ। इन अवर कंट्री एट द मोमेंट। तो ये कुछ एक ज्वाइनिंग्स और आउटलाइंस ही थी। आप कंटिन्यूसली और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। मॉडल स्पीड डिक्टेशंस वॉल्यूम 1 एंड 2 बाय डॉक्टर जीडी बिस्ट, एक्सरसाइज 2। गेट इट स्टूडेंट्स। As far as mobilization of the farmers is concerned, we did not do enough to go to the farmers to explain to them the rationale of this policy, to explain to them how it was crucial for preserving our national independence and for pursuing the path of self-reliance. Stop. We did not secure their support, and since it was not done, since mass mobilization in support of this policy was not done, all of us share the responsibility for the failure on this front. Stop. Let us be candid and let us be honest about it. Stop. I would like to remind the honorable member that both of us come from a state which is frequently visited by drought and famine. Stop. Therefore, what would happen if the government does not have the stocks? Question mark. How will they distribute food grains to famine stricken people if they had not
taken over wholesale trade in wheat in that year? Question mark. There were 15 crores to 16 crores of people in various states like Maharashtra, Rajasthan, parts of UP, Bihar, Odisha and Andhra Pradesh who were in the grip of one of the most severe droughts. Stop. It would have been impossible to feed them, and it was only because this step was taken that it was possible for the public distribution system to cater to their needs. Stop. Para. Sir. In 1965, when we had a similar famine, we distributed about 13 million tons of food grains. Stop. But 2/3 of it were imported from the United States of America under the PL 480 program. Stop. Government has been reducing the quantum of imports over the years, and therefore if we want to have self-reliance, if we want to have national honor and self-respect, and at the same time want to ensure supply of food grains to the vulnerable sections of our society, especially in areas of scarcity and drought, there is no other mechanism but to have public distribution system. Stop. Public distribution system cannot be a temporary thing. Stop. It cannot be created overnight. Stop. It must be built over a period of time, and the government must have enough stocks. Stop. How to have enough stocks is a problem. Stop. Once you admit that there should be public distribution system in our country, it will be necessary to suggest some ways, and rightly the minister inquired from the farmers what price should be fixed for wheat. Stop. Sir, public distribution system in our country at the moment covers about 16 million people under statutory rationing, and another 400 million people are covered under informal rationing. Stop. In fact, this is not enough. Stop. If we want to cover even 50% of those people who are under the poverty line, we will have to have a public distribution system which may distribute about 20 million tons of food grains. Stop. These 20 million tons of food grains cannot be procured by purchases in the open market. Stop. Will the minister point out whether it could be done by a direct levy on procedure? Question mark. Thank you.